Hello everyone, good morning. Yesterday we started limit of sum, integration, the finite integration by the limit of sum हमने स्टार्ट किया था और एल्जेब्रा वाले सम्स मैंने दो आपको करवाए थे, एक होमवर्क में भी दिया था, राइट। एक दो लोगों ने आंसर भेजा है, बाकी सबके बाकी है। मैं आज आपका वेट करूंगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्स स्क्वायर। कल लीनियर वाले करवाए थे मैंने, आज मैं करवा रहा हूं x square, then we will do exponential function, then trigonometric, then we will complete this topic. This topic is known as the finite integration as limit of sum. ये आपको पता है, उसका फॉर्मेट भी आपको याद रखना है, फॉर्मेट आपको लिखना है। ये एक सम में आज मैं लिखूंगा, बाकी बोल जाऊंगा, आपको लिखना है। एक सम में मैं आपको रिवाइज कराने के लिए बोलूंगा, लिखूंगा यहाँ, राइट। द फंक्शन fx is x square. fx equal to x square is continuous on closed interval 2 3 and differentiable on open interval 2 3. Divide close interval 2 3 in n equal subintervals, equal subintervals such that length of each interval will be h is equal to b minus a, means 3 minus 2 upon n is 1 by n, and as n tends to infinity h tends to 0. ये आपको पता होना चाहिए, इतना फॉर्मेट आपको कंपलसरी लिखना है। आफ्टर दैट सी, हाँ, whenever the sum is in algebra form, use n tends to infinitive. If we have trigonometric form or exponential function, use the limit h tends to 0. ये भी मैंने आपको बताया था, right? So therefore integration 2 to 3 x square dx equal to integration 2 to 3 x square dx equal to limit n tends to infinity h sigma I running from 1 to n f of a is to close interval a b c से कंपेयर करेंगे, then a is to the f of a plus I h। अब हर जगह जहां पर h है we will write 1 upon n, so equal to limit n tends to infinity, in place of h we are writing 1 upon n. Second thing, I is variable for the sigma and h is variable for the limit, sorry n will be variable for the limit। अभी h है, n में हम कन्वर्ट करेंगे, so याद रखना सिग्मा के लिए h या n कांस्टेंट हो जाएगा, लिमिट के लिए I कांस्टेंट हो जाएगा। सो 1 upon n sigma I running from 1 to n. What is the formula of function? That is saying fx is x square, मतलब एंगल में जो है उसका स्क्वायर करो, तो by squaring 2 plus IH square equal to limit n tends to infinity 1 upon n sigma I running from 1 to n 4 plus 4IH plus I square h square। अब ले जाओ सिग्मा को अंदर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सिग्मा इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 upon n into 4 sigma 1 I running from 1 to n 1 plus
4h sigma I running from 1 to n I plus h square sigma I running from 1 to n I square equal to in place of h we will write 1 upon n यहाँ से and we'll use sigma formula sigma I square. Sigma I means sigma n, sigma I square means sigma n square. याद रखना. So limit n tends to infinity 1 upon n 4n plus 4. In place of h there is 1 upon n and the formula of sigma n is n into n plus 1 by 2. H square means 1 upon n square and by the formula n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, getting or not, equal to limit n tends to infinity 1 upon n into 4n प्लस अब ब्रैकेट में से मैंने n कॉमन लिया सो यहां पे बनेगा n स्क्वायर एंड इन द ब्रैकेट इट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 तो है प्लस सेम हियर 1 अपॉन n स्क्वायर टेकिंग n कॉमन फ्रॉम बोथ द ब्रैकेट्स एक यहां से और एक यहां से देन इट विल बी n क्यूब एक n तो था ही एक आया दूसरा आया एंड द फॉर्म विल बी 1 plus 1 upon n into 2 plus 1 upon n upon 6 तो already we have. चलो अभी n को काटो 1 upon n फॉर्म बनाना है जहां पर भी because we know that as n tends to infinity whenever we have 1 upon n फॉर्म या फिर 1 upon n हो 1 upon n स्क्वायर हो 1 upon n क्यूब हो कुछ भी हो 1 upon 2n plus 1 कुछ भी हो the limit will be 0. तो एक एक n यहां से कटा यहां से n स्क्वायर भी गए तो सबके पास एक एक n बचा हुआ है वो n कॉमन निकलेगा इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सी n आया बाहर. Now in the bracket 4 plus 1 plus 1 upon n upon 2 plus 1 plus 1 upon n into 2 plus 1 upon n upon 6. Getting or not? ये n चल बसा. अब कहीं भी आप देख सकते हो आपको अनडिफाइंड टर्म नहीं मिलेगी. So can give the limit. After giving limit it will be 4 into plus 1 plus 0 by 2 plus 1 plus 0 into 2 plus 0 by 6 equal to 4 plus 1 by 2 plus 2 by 6 that will be 1 by 3. So 6 will be LCM. 6 LCM 1 so इसे 6 से मल्टीप्लाई करो it has 2 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा it has 3 so 2 से बटे में 6 24 plus 3 27 plus 2 29 by 6. अगर आपको क्वेश्चन वेरीफाई करना है तो आप शॉर्ट मेथड से कर सकते हो जो आगे जाके हमें करनी है. लेट मी सी एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए याद रखना. इंटीग्रेशन 2 to 3 x square dx. What is the integral of x square? It will be x cube by 3 2 to 3. It will be x cube by 3 2 to 3. चलो giving limit 1 by 3 is constant. Now see taking x equal to 3 in upper limit. So 3 cube is 27 minus lower limit 8. So 1 by 3 into 19. Let me see something is wrong.
I think there is mistake. Let me see. 1 minute. हाँ देखो यहाँ पे ये 4 लिखना मैं भूल गया था. सो 4 हमें यहाँ पे लिखना है. सो इट इज 4. सो यहाँ पे भी 4 आएगा. सो इट इज 4. देन 4/2 इज 2. तो यहाँ से करेक्शन आएगा. समझ गए ना? ओके. सो इक्वल टू 6 प्लस 1/3. 6 3 is 18 plus 1. This is our Zingo answer. So मेथड चाहे चेंज करो, आंसर चेंज नहीं होगा. कहीं ना कहीं गलती तो होगी, आपकी पकड़ा जाएगी. राइट? सो प्लीज राइट डाउन दिस. नाउ सी इट इज आल्सो अलजेब्रा फॉर्म. सो अलजेब्रा फॉर्म है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं मैं कि इक्वल टू. अच्छा पूरा सम आप कर सकते हो ना. fx is x square minus x. fx is x square minus x. इंटरवल बनेगा 1 to 4. आपका h बनेगा b minus a by n means 3 by n. Now you can. अब यहां से मैं आपको सम दे रहा हूं. ये सम आपको करना है. उसके बाद वाला सम, फिफ्थ सम में करने जा रहा हूं. That is exponential function. Fifth sum is integration -1 to 1 e raised to x dx. अगर आपके पास e raised to x है या a raised to x है या 3 raised to x है या 5 raised to x है, कुछ भी हो, मेथड यही रहेगी जो मैं अभी करने जा रहा हूं. अब मैं ये स्टोरी लिखने वाला नहीं हूं. यहाँ पे स्टोरी आपको लिखनी है पूरी कि fx is equal to e raised to x. fx is equal to e raised to x is continuous on closed interval -1 to 1 and differentiable on open interval -1 to 1. So a is -1, b is 1. So डायरेक्ट मैं इंटरवल लिखूंगा. h is equal to b minus a upon n is 2 by n. Now see, whenever we have exponential function, आपको nh की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी. So nh will be 2. nh is 2 and n will be 2 by h. क्योंकि whenever we have exponential function or trigonometry, we will use h tends to 0. तो ये भी आपको याद रखना है कि मुझे n के बदले 2 by h लिखना है. So as n tends to infinity and as n tends to infinity, h tends to 0. So integration -1 to 1 e raised to x dx equal to limit h tends to 0 h sigma I running from 1 to n f of a is -1 plus ih. Getting or not? Now what is the value of fx? fx is e raised to x. fx is saying कि उसके एंगल में जो है उसको e की एक्सपोनेंट में डालो. ओके तो इसे डालेंगे e की एक्सपोनेंट में इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा I running from 1 to n e raised to -1 plus ih. By law of indices we can write in this way. See, limit h tends to 0 h sigma I running from 1 to n e raised to -1 into e raised to ih. E raised to -1 is constant for sigma and limit, because variable for sigma is I and variable for limit is h. We know this. So e raised to -1 मैंने लिया बाहर. So e raised to -1 limit h tends to 0 h sigma I running from 1 to n e raised to ih. Now here
इट विल बी सीक्वेंस. कैसी सीक्वेंस बनेगी? सी इक्वल टू e raised to minus 1 means 1 upon e limit h tends to 0 h into, now see, when we take I is equal to 1 it will be e raised to h due to sigma there is summation, so plus. For I equal to 2 it will be e raised to 2h. For 3 it will be e raised to 3h till n it will be e raised to nh. Remember it. Now see, it is gp in bracket. कैसे? e raised to 2h को e raised to h से डिवाइड करो, the ratio will be e raised to h. e raised to 3h को e raised to 2h से डिवाइड करो, it will be e raised to h. मतलब this is gp. If it is gp, its first term a is e raised to h, is common ratio is e raised to h, and total number of terms is n. So we have the formula for the addition of n terms for gp, right? So by using that formula equal to 1 upon e limit h tends to 0 h into a means e raised to h into r raised to n. R is e raised to h raised to n minus 1 upon r minus 1. Getting or not? ये फॉर्म आपको याद रखना है, और हमेशा याद रखो कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो हमेशा फॉर्मूला बनाएगी. कैसे? ये h को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, सो 1 upon e लिमिट h tends to 0 e raised to h as it is, ये बनेगा e raised to nh. फॉर दैट मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि nh की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पे nh is 2 minus 1 upon in denominator it is formula e raised to h minus 1 upon h, so it is the formula. So by giving limit equal to 1 upon e, see it will be e raised to 0, nh is 2 we have, so e raised to 2 minus 1, and the formula for this is 1 because it will be log e base e, and whenever we have log e base e answer is 1, so equal to 1 upon e into e square minus 1, so final answer is e minus 1 upon e. Easy. कितना इजी हो गया. अब आपको वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हो, इजीली हो जाएगा. द इंटीग्रल ऑफ e raised to x is e raised to x, e raised to minus 1 minus e raised to 1, सो सीधा आपको ये आंसर मिलने वाला है. समझ गए मेरी बात आप कि नहीं समझे? ओके, सो लिख लो इतना. ओके, वन मोर सम, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में ट्रिगो वाले सम्स नहीं दिए हुए हैं, वो अलग से मैं करवाने वाला हूं, राइट? सो लेट मी fx is equal to x plus e raised to 2x is continuous on closed interval 0,4, differentiable on open interval 0,4, divide closed interval 0,4 in n equal sub intervals, then length of each sub interval will be b minus a upon n is 4 by n. Whenever we have exponential function, आपको nh की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है. सेकेंड थिंग, we have exponential function, so we will use limit h tends to 0, but see it is select form. यहाँ पे algebra भी है और exponential भी है, तो दोनों के लिए हमें डिफरेंट वे में जाना पड़ेगा. सो बीच में से we will divide it, दो पार्ट में हम इसे स्प्लिट कर देंगे, एक को n टेंड्स टू इंफिनिटिव, एक को h टेंड्स टू 0 हम देने वाले हैं, राइट? तो लेट मी स्टार्ट. इंटीग्रेशन 0 to 4 x plus e raised to x dx is equal to,
either limit n tends to infinitive or h tends to 0, h sigma I running from 1 to n. Fx is what? F of a plus ih. F of a is 0, ih is ih. Now by the definition of f, fx is saying x plus e raised to 2x. So we have ih in place of x. So we'll write ih plus e raised to 2ih equal to limit h tends to 0, h sigma I running from 1 to n, ih plus e raised to ih. Now by giving separate sigma inside equal to limit h tends to 0 or n tends to infinitive, limit h tends to 0 or n tends to infinitive, h into h sigma I running from 1 to n plus sigma I running from 1 to n e raised to ih. अभी ये वाले h को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, सो इक्वल टू आइदर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव और h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर here there is I, h स्क्वायर सिग्मा I रनिंग फ्रॉम 1 to n I प्लस ये h इससे भी मल्टीप्लाई होगा, h सिग्मा I रनिंग फ्रॉम 1 to n e raised to ih. Actually it is 2x, so 2ih समझे ना, x plus e raised to 2x, ih plus e raised to 2ih, right? Now give limit separate, so equal to limit h tends to 0, h square or n tends to infinity, h square sigma I running from 1 to ni plus limit either h tends to 0 or n tends to infinitive, sigma h sigma I running from 1 to n e raised to 2ih. Now see, it is algebra form. So यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे n tends to infinitive, it is exponential, so we will consider h tends to 0 after giving separate limit, right? चलो, so equal to, देखते रहना, limit n tends to infinitive, in place of h we will write 4 by n, it is h square, so will be 16 by n square into formula of sigma I means sigma n into n plus 1 by 2 plus limit h tends to 0, यहाँ पे h की लिमिट आएगी, limit h tends to 0, h. Now we will make here sequence. See, by taking I is equal to 1, it will be e raised to 2h plus when we take I is equal to 2, it will be 4h, e raised to 4h plus e raised to 6h till when we take I is equal to n and it will be e raised to 2nh. So it is also GP. It is also GP. In this GP, the first term a is e raised to 2h, common ratio r is e raised to 2h, and we have total n terms, so n is equal to n. So यहाँ पे से मैं n कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, so equal to limit n tends to infinitive 16 by n square, यहाँ से n कॉमन लिया, so n square into 1 plus 1 upon n upon 2 plus limit h tends to 0, h. Now formula of sum of first n terms of GP, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1.
आपको ये भी पता है कि ये टर्म फॉर्मूला बनाएगी, फॉर दैट ये h को मुझे डिनोमिनेटर में लाना है। यहां से n स्क्वायर गए, 2 8 जा 16, सो इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 8 into 1 plus 1 upon n plus limit h tends to 0. See, it is e raised to 2h into e raised to 2nh minus 1, और ये वाले h को मैंने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में दिया, बट टू मेक हियर फॉर्मूला द डिनोमिनेटर शुड बी 2h, e raised to 2h minus 1 upon 2h होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मूला फॉर्म। नाउ बाय गिविंग द लिमिट्स, से यहाँ पे बनेगा 8 into 1 plus 0 as n tends to infinity 1 upon n tends to 0 plus as h tends to 0 it is e raised to 0 into e raised to 2nh, nh is 4, so 2nh will be 8, so e raised to 8, nh के बदले 4 टिका, 4 to the 8 minus 1 upon 2 times 1 equal to 8 plus e raised to 0 is 1, so e raised to 8 minus 1 upon 2 into 1 is 2. So this is the answer. अगर आपको वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हो, right? So please write down this. Now see, find the integral of cos x as the limit of sum for the domain closed interval AB. तो यहाँ पे भी हमें लिमिट ऑफ सम से सम करना है, सीधा इंटीग्रेशन नहीं करना है। अगर सीधा करना होता तो एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाता, बट बुक में ट्रिगोनोमेट्री वाला सम नहीं दिया। ट्रिगोनोमेट्री में भी देखो, याद रखो, सिर्फ और सिर्फ हमें साइन कॉस के ही सम करने हैं। टेन कॉट सेक कोसेक को एंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉस, बिकॉज दे आर वेरी बोल्ड फंक्शंस। उनका जो ट्रिगोनोमेट्री में रोल है वो सबसे ज्यादा है, इसीलिए उनको ये ऑनर दिया है, इतना रिस्पेक्ट दिया है कि यू कैन कम इन द लिमिट ऑफ दिस सम, राइट? सो सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस के सम्स आएंगे, टेन कॉट सेक कोसेक के नहीं आएंगे, याद रखना। सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मेट आपको लिखना है। मैं बोलता हूं यहाँ पे कि fx इज इक्वल टू कॉस एक्स, fx इज इक्वल टू कॉस एक्स is continuous on closed interval AB, differentiable on open interval AB, and divide closed interval AB in n equal sub intervals such that S is equal to B minus A upon n and NH will be B minus A. यहां भी मुझे NH की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड थिंग, मैंने आपको बताया, whenever we have exponential function or trigonometry, use limit h tends to 0, n tends to infinity, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा के लिए, राइट? चलो, सो बाय यूजिंग therefore integration a to b cos x dx, it is our function. fx is cos x, f alpha will be cos alpha, f ih will be cos ih, याद रखना, equal to limit h tends to 0, h sigma I running from 1 to n, f of a plus ih. a is a is a, आपको याद रखना है। Now fx is cos x, so f a plus ih will be cos a plus ih. So limit h tends to 0, h sigma I running from 1 to n, cos a plus ih. अब यहां से थोड़ी स्टोरी चेंज होगी, यहां से हमें बनाना है पूरा सीक्वेंस फॉर्म, मतलब सिग्मा को मैं स्प्लिट करूंगा लाइक दिस, सी लिमिट h tends to 0, h now giving sigma when, अच्छा a is a, तो उसे कुछ भी होना नहीं है, वही रहेगा, पुटिंग i is equal to 1,
The first term will be cos A plus H. Due to sigma there is summation. So plus taking I is equal to 2. It will be cos A plus 2H. For I is equal to 3. It will be cos A plus 3H. In the same way till end it will be cos A plus NH. Cos A plus NH. Getting or not? Then अब चाहे cos का सम हो या sin का, आपको एक चीज याद रखनी है कि 2 sin h/2 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। चाहे cos का सम हो या sin का, a to b की लिमिट हो या 0 to π/2, whenever we have trigonometric function, इतना याद रखो 2 sin h/2 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे 2 sin h/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन 2 sin h/2, ये मैंने बाहर डिवाइड किया, नाउ विल मल्टीप्लाई इनसाइड, सो इक्वल टू इट विल बी 2 cos A plus H into sin h/2। मतलब मैंने 2 sin h/2 से मल्टीप्लाई किया, पर फॉर्म को भी थोड़ा मैंने एडजस्ट करके लिखा ताकि एक स्टेप हमारा कम हो जाए। डायरेक्ट वी कैन यूज 2cs जब तक डिनोमिनेटर में sin h/2 है, वी कांट गिव द लिमिट क्योंकि डिनोमिनेटर विल बी 0, इसीलिए हमें इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फॉर दैट यहां पे भी मल्टीप्लाई करो, सो 2 cos A plus 2H into sin h/2 for this। ऐसे करते करते यहां पे आ जाओ, सो 2 cos A plus NH into sin h/2। Getting or not? After that, everywhere we will use 2cs, right? So equal to लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये वाला टू मैं ऊपर h के डिनोमिनेटर में दे रहा हूं, सो h/2 अपॉन sin h/2। ओहो, इट इज अवर फॉर्मूला, ओल्ड इज गोल्ड, sin थीटा अपॉन थीटा वाली। सी sin h/2 अपॉन h/2 का रेसिप्रोकल फॉर्म है, स्टिल इस आंसर विल बी 1। तो ये फॉर्म तो बन गया। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। 2cs s माइनस s in first addition, in second subtraction। तो देखो फर्स्ट s minus s in first addition means a plus h plus h/2, a plus 3h/2 minus sin a plus h minus h/2। तो एक आधा h/2 गया, आधा बचेगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म का फॉर्म है। Now for the second term, वापस 2cs s minus s in first addition, 2 to the 4 plus 1, 5h/2 minus sin 2 to the 4 minus 1, 3h/2, so it will be a plus 3h/2। It is for second bracket। अगर आपको थर्ड के लिए भी करना हो तो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसके पास 2 sin h/2 है, तो देखो sin a plus 3 to the 6 plus 1, 7h/2 minus sin a plus 2 3 the 6 minus 1, 5h/2। This is for third bracket, and for nth bracket हम यहाँ पे जाएंगे प्लस देस प्लस, देखो साइन a प्लस NH प्लस h/2 माइनस साइन a प्लस NH माइनस h/2। अब क्या किया जाए, तो देखो अब दो कंसेक्यूटिव ब्रैकेट्स देखो, आगे वाले का फर्स्ट, पीछे वाले का सेकंड कटेगा, प्लस माइनस। अच्छा, इसके बाद वाला देखो, इसके आगे वाला देखोगे
तो उसका फर्स्ट इसका सेकंड कटेगा, पर इससे आगे तो ब्रैकेट है ही नहीं। नाउ फॉर दिस टू कंसेक्यूटिव ब्रैकेट्स, ये और ये गया, तो जो दो ब्रैकेट आप लोगे ऑल्टरनेट, उसमें आगे वाले का फर्स्ट पीछे वाले का सेकंड कटेगा। जैसे इसके बाद वाला ब्रैकेट लोगे तो इसका फर्स्ट और उसका सेकंड कटेगा। जैसे इसके आगे वाला ब्रैकेट मैंने लिया तो उसका फर्स्ट और इसका सेकंड कटेगा। इस तरह से कटते कटते हमारे पास दो ही टर्म्स बचेगी, फर्स्ट का सेकंड और लास्ट का फर्स्ट। सो इक्वल टू लिमिट h tends to 0, h by 2 upon sin h by 2, it is plus it is minus, तो मैं इसे पहले लिखूंगा sin a plus nh plus h by 2 minus sin a plus, now by giving limit in place of nh we will write b minus a. So after giving limit it is formula which gives 1 into sin a plus nh is b minus a plus h by 2 is 0 minus sin a plus 0 plus a minus a चल बसे, it is sin b. So final answer is sin b minus sin a into 1, that is sin b minus sin a, which is our Zingo answer. तो ट्रिगोनोमेट्री में भी आपको ये देखना है। एक और सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं फॉर योर फर्दर प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x dx, याद रखना इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x dx, ये आपको करना है। मेथड सारी मैंने आपको दे दी। सो टुडे आवर टॉपिक डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम इज गोइंग टू बी कंप्लीट हो गया, ऐसा ही समझ लो। सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। तब तक के लिए see you, bye bye, टाटा।